Hello friends, today my topic is class 12 chapter 1 solutions. Now students, you already learned through this term solution in class 11 that solution is the homogeneous mixtures and it is made up of solute plus solvent and which are in the single phase, whether it is solid phase, whether it is the liquid phase and whether it is gaseous phase. Now, in normal life, we rarely come across pure substances. Most of these are mixtures. हम जो हैं नॉर्मल लाइफ में बहुत मिक्सचर्स के गो थ्रू होते हैं जो किससे बने हुए हैं प्योर सब्सटेंसेस से ही बने हुए हैं बट द यूटिलिटी और इम्पॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड अपॉन देयर कॉम्पोजिशन. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास दैट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक is quite different from those of the German silver, and the German silver is the mixture of copper, zinc and nickel. Now next is bronze. Bronze is the mixture of copper and tin. Now 1 ppm. Now what is ppm? Parts per million of fluoride आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके. अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आपके वाटर में 1 ppm है, क्लियर, 1 ppm है तो वो आपके टूथ डिके को रोकती है. बट अगर वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होके 1.5 हो जाए एंड दिस कॉज द टूथ to become mottled and high concentration of fluoride ions can be poisonous. Now for example, sodium fluoride is used in the rat poison. अगर ज़्यादा concentration हो जाएगी तो ये हमारे harmful भी है. Now sodium fluoride is used in the rat poisons. Now intravenous injection. Now बच्चों intravenous injection means जो इंजेक्शन हम डायरेक्टली वेन्स में डाल दें और वेन्स के थ्रू डायरेक्टली वो किस में चला जाए, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए, तो वो इंजेक्शंस क्या कहलाते हैं? इंट्रावेनस इंजेक्शन. बिकॉज द मीनिंग ऑफ इंट्रावेनस मीन्स इनटू द वेन्स. आर ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन वाटर containing salt at particular ionic concentration and that match with the blood plasma concentration and so on. आपको कोई भी जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं उनको हम सोल्ट के अंदर और सोल्ट को किस में डिज़ोल्व कर कर पानी में डिज़ोल्व करके सीधा वेन्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू ब्लड प्लाज्मा. Now in this unit we usually consider mostly liquid solutions and their formation. इस चैप्टर में हम सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे लाइक वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट यू से. नाउ वी विल बिगिन विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? एज आई हैव already told you, solutions are homogeneous mixtures made up of 2 or more component. Now here the one component which is present in the largest quantity is known as solvent, and solvent determine the physical state in which the solution exists. एक क्या कहेंगे बच्चे कि जो सॉल्वेंट है जो डिसाइड करेगा कि आपके सॉल्यूशन की क्या स्टेट आपको नज़र आनी है, कि वो सॉलिड दिखेगा, कि वो लिक्विड दिखेगा, कि वो क्या दिखेगा, गैसियस. नाउ वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन देन अदर. जो स्मॉल अमाउंट है जो दूसरे की कंपैरिजन जब आप सॉल्वेंट की कंपेयर करोगे तो जो सब्सटेंस कम होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सॉल्यूट. सो इन दिस यूनिट वी कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस. नाउ व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी मीन्स टू. हियर द सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज present. Now here is the table of the types of solution. Now solutions are of 3 types. Maybe gaseous solutions means you see only a gaseous phase. Liquid solutions you see only liquid phase, and in solid solution you see only solid phase. Now solute may be gas, liquid, solid, but the solvent is gas, gas, gas. Now first is gas in gas. Now mixture of oxygen and nitrogen gas. Liquid in gas. Chloroform mixed with nitrogen gas. Solid in gas. Camphor in nitrogen gas.
liquid solution, gas in liquid, oxygen dissolved in water, liquid ethanol dissolved in water, solid liquid, glucose dissolved in water. Now next is the solid solutions, gas in solid, solution of hydrogen in palladium, platinum, nickel. Now all these are the solutions of hydrogen. Now next is liquid in solid, amalgam of mercury with sodium. Now solid in solid, copper dissolved in gold. Now next is the expressing the concentration of the solutions. Now in class 11, you must learn that what is percentage, molarity, concentration of the solution. You heard these terms. Now we will discussing this term with detail. The composition of the solution can be described by expressing its concentration. The latter can be expressed either qualitatively or quantitatively. क्लियर. सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बताकर. क्लियर. और लेटर हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसकी क्वालिटी को भी बताकर या फिर उसकी क्वांटिटेटिवली या क्वांटिटी को बताकर. फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. भाई क्वालिटेटिवली कहें कि भाई सॉल्यूशन डाइल्यूट है, या फिर सॉल्यूशन कैसा है, concentrated, because in dilute solution there is water present in the excess and the concentrated solution solute is present in the excess. But in real life these kinds of description can add to the lot of confusion and thus need for a quantitative description. Real life में हम ये नहीं बता पाते बच्चे कि भाई आपका जो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो होता है हम नहीं बता पाते, इसलिए हम जनरली क्या बताते हैं, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन. नाउ क्वांटिटी मीन्स टू फाइंड आउट हाउ मच सोल्यूट डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर सोल्यूशन or the how much solvent is dissolved in a particular solution. Now here the first term is mass percentage, or you can say W by W. Now the mass percentage of a component of the solution is defined as, now mass percentage हम कैसे निकालेंगे किसी भी component. Now here the component word I tell you that is for the solute and for the solvent, because in the solution two component is present, one is solute and one is solvent. Now percentage of that component means if you want to calculate the percentage of solute, you can calculate it, and if you want to calculate the percentage of solvent, then we can calculate the percentage of solvent. Now any component that you want to study, हम उसको कैसे निकालेंगे, mass of component of the solution means if you consider the solute then mass of the solute, and if you consider the solvent then mass of the solvent divided by total mass of the solution multiply by 100. Now for example, if I give you the 10% glucose in water, मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया बच्चे जिसका मतलब क्या है 10% ग्लूकोज. मैं कहती हूँ दिस इज द 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर. Now here firstly you have to understand what is the meaning of 10%, where 10 is solute, amount of solute. Percent means 100 and 100 means amount of solution. That means solvent is 90 gram. So आप इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चे, 10 ग्राम सोल्यूट को 90 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके 100 ग्राम सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है. नाउ कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय द मास परसेंटेज इज यूजुअली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल commercially bleaching solution contain 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water. कहने का मतलब क्या है बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर जो हम कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं उसमें क्या है 3.62 ग्राम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन सोल्यूट है जो किसके अंदर डिज़ोल्व है, 100 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व है. Now next is volume percentage, V by V.
Here both the volume of solute as well as volume of solvent both are taken in ml. Now next is the volume percentage of the component. Now volume of the component upon with total volume of the solution multiply by 100. For example, 10% ethanol solution in water. 10% ethanol solution in water means 10 ml of ethanol dissolved in 90 ml of water or 100 ml of solution you can prepare. Now for example, 35% of V by V solution of ethylene glycol. 35% of V by V solution of ethylene glycol, which is the antifreeze, which is an antifreeze. Now this antifreeze lower the freezing point of water. This antifreeze substance lower the freezing point of water. That is from 255 Kelvin to minus 17.6 degree Celsius. Now third term is mass by volume percentage. Now another unit which is commonly used in the medicine and the pharmacy is mass by volume percentage. Now it is the mass of the solute dissolved in 100 ml of the solution. Here I think that the gram, that if you have a solid solute but dissolved in the liquid. Now next term is parts per million. Now when a solute is present in the trace quantity, मीन्स अब आपके पास सॉल्वेंट इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर सोल्यूट बस माइन्यूट है, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, देन व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द ट्रेस क्वांटिटी इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज इन ppm. Now ppm is equal to number of parts of the component upon में total number of parts of the component of the solution multiply by 10 to the power 6. As in case of percentage, concentration in the parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and the mass to volume. बच्चे ppm को भी हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने तीनों कंसंट्रेशन टर्म लिए हैं, दैट इज मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड द मास बाय वॉल्यूम. नाउ अ लिटिल ऑफ सी वाटर, a liter of sea water which weigh 1030 ग्राम. सी वाटर, 1 लीटर सी वाटर का वेट कितना है 1030 ग्राम. कंटेन, उसके अंदर क्या है बच्चे 6 इंटू 10⁻³ ग्राम डिजोल्ड ऑक्सीजन है. सच स्मॉल फ्रैक्शन आप उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे एस 5.8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम, दैट इज 5.8 ppm of seawater. The concentration of the pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram per liter or the ppm. पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन वाटर और एटमॉस्फेयर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम ppm में. Now your next term is mole fraction. Now mole fraction commonly used, जो सिंबल है इसके लिए दैट इज डिनोटेड बाय x and subscript used on the right hand side of x denotes the component. Now mole fraction of component, number of moles of component upon में total number of moles of all the component. Means if you want to calculate the mole fraction of any component in given solution, firstly you find out the moles of each and every component and then you find out the, suppose you want to find out the mole fraction of solute, then number of moles of solute upon my total number of moles of solute. Now here the total number of moles of moles means number of moles of solute plus mean number of moles of this solvent. So you can easily calculate it. Now for example, you have two substances or two solutions A and B. In solution A, number of moles of solution A is Na
and in solution B, number of moles of solution though in B is NB. Now you want to calculate the mole fraction of A. So how do you calculate it? Moles of A upon में moles of A plus moles of B. Now again, all the mole fraction, all the number of moles or all the mole fraction in a given solution is taken as 1. So the mole fraction unit is usually relating some physical quantity of the solutions, say vapor pressure, with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculation involving gas mixtures. भाई मोल फ्रैक्शन से आप काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी को सॉल्व कर सकते हो, जो किसमें ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती हैं? गैस मिक्सचर्स में यूज़ होती हैं. Clear? Now here is one numerical that is related with the mole fraction. Now the numerical is calculate the mole fraction of ethylene glycol, that is C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass. Now what is the formula of ethylene glycol? C2H6O2. और हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का. एंड हैविंग द सॉल्यूशन 20%, एंड द मीनिंग ऑफ द 20% इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट 20, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100, सो द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 80. So firstly you have to calculate the number of moles of solute as well as solvent. Now solute is ethylene glycol and solvent is water. Now how can you calculate the moles of solute? That is moles of ethylene glycol given weight upon molar mass. Now the given weight is 20, molar mass 62. When you divide it, you will get 0.322 moles. And the moles of water 80 by 18, that is 4.4 moles. Now you can easily calculate the number of moles of glycol, mole fractions of the glycol, that is number of moles of ethylene glycol divided by total number of moles, that is 0.322 divided by 0.322 plus 4.44. Here by calculating it we will get the 0.068. Similarly, if you want to calculate the mole fraction of water, that will be 4.44 upon my total number of moles, which comes out to be 0.932. Now mole fraction of water can be calculated as 1 minus 0.068, which is equal to 0.932. Now next is molarity. Now what is molarity? Number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. 1 लीटर solution के अंदर कितना आपका solute dissolve है, that is called the molarity. Now molarity, moles of solute divided by volume of the solution in liters. Now again same problem, that how can we calculate the moles? That will be W by M, and volume should be in the liter. Now here is the one more example about the calculation of molarity, that calculate the molarity of the solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. Now moles of NaOH, that is 5 by 40, which is equal to 0.125 mole, and volume of the solution 450 ml divided by 1000, and it comes out to be in liter. Now molarity is equal to 0.125 divided by 450 multiplied by 1000, it comes out to be 0.278 moles, that is capital M, moles per liter. Now next term is molality. Now molality is defined as the number of moles of solute पर kg of the solvent. मीन्स कितने सॉल्वेंट में आपने कितने मोल्स डिजोल्व किए हुए हैं सॉल्यूट के. नाउ मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन पर kg of the solvent. For example, 1 mole per kg solution of KCl. Suppose I'll give you 1 mole per kg of the solution, means 1 mole KCl added in the 1 kg of water.
Each method of expressing the concentration of the solution has its own merits and the demerits. Mass percentage, ppm, mole fraction, molality are independent of temperature, whereas molarity is the solution or is the function of temperature. मोलारिटी किसका है, किस पे डिपेंड करती है बच्चे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. बाकी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म किस पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर. नाउ हियर क्यों, बिकॉज मोलरिटी डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम और depend upon the volume and that is changes with the temperature. Now your next numerical is calculate the molality. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है. किसकी कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड और द एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. किसमें, 75 ग्राम बेंजीन के अंदर आपने क्या ऐड किया हुआ है, 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड. फर्स्टली यू हैव टू नो विच इज solute and which one is the solvent. Now here the solute is 2.5 gram and the solvent is 75 gram. Now the molar mass of the ethanoic acid, it will comes out to be 60 by adding all the masses of the atom, and the number of moles of ethanoic acid is 2.5 divided by 60 and it comes out to be 0.041. Now in case of mass of benzene, that is 75 gram. Now how can we calculate the molality, number of moles of solute, and the moles of solute is 0.0417 divided by that, which comes out to be, if you want, if mass of the benzene is 75 gram but you have to convert it into kg, that is divided by 75 multiplied by 1000 and it comes out to be 0.556 moles per kg. Now here are some numericals that represent the various in text question. Now calculate the mass percentage of the benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. Now how, ऐसे कैसे हम निकालें. Now the mass percentage if we want to calculate, अब हमें mass percentage किससे निकालनी है, benzene की. Now the mass of the benzene is 22, so you have to know the amount of mass upon में amount of benzene upon में amount of solution, that is 122 plus by 22 which comes out to be 144. So 22 divided by 144 multiplied by 100, and in case of CCl4 and this is 122 gram, so 122 divided by 144 multiplied by 100. Now calculate the mole fraction of the benzene in solution containing 30% biomass in CCl4. Now benzene का मोल फ्रैक्शन निकालना है और सोल्यूशन कितना है, 30%. किसके अंदर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. हाउ इज इट पॉसिबल. नाउ फर्स्टली यू हैव टू नो what is 30% solution. Now 30% solution means 30 gram solute dissolved in 100 gram of CCl4. Now the amount of solute 30, amount of solution 100 and the amount of solvent, that is CCl4, that comes out to be 70. So can we calculate the benzene? Yes, we can easily calculate. Now 30 by molar mass of benzene upon में moles of benzene plus में moles of CCl4, that is 70 by mass of CCl4. We can easily calculate it. Now next is question number 3. Calculate the molarity of each of the following solutions. अब molarity निकालनी है हमें तो बच्चे, कैसे निकालेंगे. 30 gram of cobalt nitrate hexahydrate in 4.3 liter of the solution.
नाउ मोलैरिटी निकालने के लिए आई वांट W इज 30 ग्राम, M that is the molar mass of cobalt nitrate by adding the mass of all the atom and divided by 4.3 liters, and we can easily solve it. Now here 30 ml of 0.5 m सल्फ्यूरिक एसिड, आपको 30 ml दे रखा है 0.5 m सल्फ्यूरिक एसिड का, और उसको डेल्यूट कर रहे हो 500 ml वाटर डाल के. नाउ बच्चों यहाँ से मैं आपको एक बात बता देती हूँ. सपोज आपको एक सोल्यूशन दिया गया है एंड यू हैव टू प्रिपेयर द सोल्यूशन, दैट विल बी द सेकेंड सोल्यूशन. आपको 1 दिया गया है, 1 से ही हमें क्या तैयार करना है, सेकेंड सोल्यूशन तैयार करना है. देन यू हैव टू यूज़ molarity volume equation, that will be M1 V1 is equal to M2 V2, where M1 30 ml, M1 0.5, V1 30 equal to V1 V2 500 and M2 you have to calculate. So 30 into 0.5 divided by 500, and you can easily calculate the molarity of solution. Now next one is calculate the mass of urea. Now urea formula is NH2CO NH2 required in making. आपको मास निकालना है यूरिया का, और क्या आपको दिया गया है 2.5 kg. आपको क्या दिया गया है, required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. क्या दिया गया आपको, molar aqueous solution. Firstly we have to know what is the meaning of 0.25 molar. Now molar means molality, and what is the meaning of this 0.25 molar? That means 0.25 moles. That means 0.25 moles of urea dissolved in 1 kg of solvent. क्लियर भाई, 0.25 तो 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो यू कैन ईजली सॉल्व ना 2.5 kg कितने में डिजोल्व होगा. यू कैन ईजली सॉल्व द मास ऑफ द यूरिया. नाउ द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मोलारिटी mole fraction of potassium iodide if the density of 20% aqueous Ki is 1.202. Now here we have 20% solution and the molality density is 1.202. Now how is it possible that 20% solution means 20 gram solute and percent means 100 and the amount of solution is 100. Clear? Now मोलैलिटी कैसे निकालेंगे बच्चे, और मोलैरिटी कैसे निकालेंगे. मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नाउ यू हैव 20 डिवाइडेड बाय पोटेशियम आयोडाइड मास एंड डिवाइडेड इन द पर kg. नाउ kg you know that is 100 minus 20, it comes out to be 80. So that is converted into kg. Now you can easily calculate the molality. Now for the molarity, number of moles easily calculate. Now if you want to calculate the volume, then you have the density. Now density is equal to mass by volume. Mass is 100 gram, volume you have to calculate, and the density is 1.202 gram per ml, and we can easily calculate it. Now your next topic is solubility. नाउ सॉल्युबिलिटी क्या बच्चे, सॉल्युबिलिटी मीन्स डिज़ोल्व होना. आप किसी चीज़ को, किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, क्या वो डिज़ोल्व हो रहा है उसके अंदर. नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट. सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिज़ोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बाय और डिज़ोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ solvent at a specific temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रखना बड़ा ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप तो कितना ही सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं फिर. नाउ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर.
Now let us consider the effect of these factors in solution of a solid or a gas in a liquid. Now next is solubility of a solid in a liquid. Now you know that बच्चे कि every solid does not dissolve in a given liquid. While sodium chloride, sugar dissolve readily in water. आपको पता है सोडियम क्लोराइड और शुगर डिजोल्व हो जाता है वाटर में, बट नेपथलीन एंड एंथ्रासीन दीज टू आर द केमिकल विच डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर. ऑन द अदर हैंड हम नेपथलीन और एंथ्रासीन को देखें, दे डिजोल्व इन द बेंजीन, but sodium chloride and sugar does not. How is it happen? It is observed that polar solutes dissolve in polar solvent. ये ऑब्जर्वेशन की गई है बेटा कि पोलर सोल्यूट हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर सोल्यूट हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिजोल्व होते हैं. नाउ तो व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स? नाउ फॉर एग्जांपल, I'll take HCl molecule. I'll take HCl molecule, or you have water molecule. In case of water, if I see the electronegativity concept, oxygen has higher electronegative element than hydrogen. So due to this electronegativity, oxygen acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial positive charge. So due to this charges, they acquire poles. And when these acquire poles, these are called the polar molecules, and polar compounds dissolve in a polar solvents and non-polar dissolve in a non-polar solvents. In general, a solute, if the intermolecular interactions are similar in the two, or we may say like dissolve like. जनरली हम क्या कहते हैं बच्चे? सोल्यूट उसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करता है जिनकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस कैसी हो, सिमिलर हो, तो हम उसको बोल देते हैं लाइक डिजोल्व. लाइक मीन्स जो जैसा होता है वो वैसे ही क्या हो जाता है. When a solid solute is added to the solvent, जब भी किसी आप सॉलिड सोल्यूट को, मीन्स यू ऐड salt in water or the sugar in water, some solute dissolve and its concentration increases in the solutions. This process is known as dissolution. कि भाई वे सोल्यूट डिजोल्व होने लग जाएंगे और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है रेगुलरली बढ़ने लग जाएगी किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, dissolution. Some solute particles in the solution collide with the solid solute particles. जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है सोल्यूशन के अंदर वो कोलाइड करते हैं सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन. अब कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे सोल्यूशन के अंदर कोलाइड करेंगे सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ और फिर सोल्यूशन से बाहर निकलेंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे. नाउ दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. अब एक स्टेज ऐसी आती है जब दोनों प्रोसेस क्या करेंगे, सेम रेट से चलेंगे, और अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, जितने पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं और जितने पार्टिकल सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होकर बाहर आ रहे हैं, मीन्स डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बोथ आर इन द स्टेट ऑफ डायनामिक equilibrium is reached. Now solute plus solvent equilibrium with the solution. Now at this stage the concentration of the solute in the solution will remain constant under the given condition. अब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो होगी किसी एट दिस स्टेज पर बिल्कुल सेम रहेगी, विल रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. Now similar process is followed when the gas are dissolved in the liquid solvent. बिल्कुल सेम प्रोसेस तब भी फॉलो किया जाता है जब गैसेस को किसके अंदर डिजोल्व किया जाता है, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर. Now such a solution in which no more solute can be dissolved. भाई ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब और ज़्यादा सॉल्वेंट आप डाल नहीं सकते तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन. At unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at same temperature. भाई अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, वो होता है जिसमें आप सेम टेम्परेचर पर आप और भी सोल्यूट ऐड कर सकते हैं. नाउ द सोल्यूशन विच इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द अनडिजोल्व्ड सोल्यूट, मीन्स डिसोल्यूशन मीन्स जो डिजोल्व हो गया और अनडिजोल्व जो
डिजोल्व नहीं हुआ है, इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ solvent. Thus the concentration of the solute in such a solution is its solubility. तो इस कंडीशन में कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो इस केसेस में जो कंसंट्रेशन आती है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो इक्विलिब्रियम आता है वो, और जो उसकी कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की, इन सच सॉल्यूशन में हम उसकी सॉल्युबिलिटी को ही मान लेते हैं. तो अर्लियर वी ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. इन एडिशन टू दिस वेरिएबल टू अदर पैरामीटर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो कंट्रोल दिस फिनोमिना. पहला फैक्टर तो क्या, आप किसके अंदर क्या चीज़ डिजोल्व कर रहे हो, मीन्स पोलर कंपाउंड्स ऑलवेज डिजोल्व इन वाटर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. Besides of this, two more parameters, that is called the temperature and pressure, which also affect the solubility. Now first is effect of temperature. Now the very simple example that you have ever seen, that when you boil water, in a simple cold water you will add 1 tablespoon sugar or the 2 tablespoon sugar, but when you heat this water you can add 3, 4, 5, है ना. Now that means temperature always increases the solubility. Now the solubility of solid in a liquid is significantly affected by the temperature. तो अगर हम कंसीडर करें इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1.10, दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम, और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा बेटा, ली-चैटेलियर principle. Now what is Lee-Chatelier principle? It is nearly saturated solution. The dissolution process is endothermic. क्लियर हुआ. तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एंडोधर्मिक. मीन्स जब आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो डिज़ोल्व होने के लिए एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इफ़ इट इज़ एक्सोधर्मिक. लेकिन सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी इफ़ यू इंक्रीज द temperature, that means reaction if it is exothermic reaction. The solubility should decreases. The stands are also observed experimentally. मीन्स अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सोल्युबिलिटी भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट. कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है प्रेशर का, किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, बिकॉज सॉलिड डज नॉट have the variable volumes. Now significant effect on the solubility of the solid in the liquids, because solid and liquid are highly incompressible. Solid liquids को दबा तो सकते नहीं हम, and practically remain are affected by the changes in the pressure. तो जब अगर आप प्रेशर बदलते जाओगे तो प्रेशर की चेंज से उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता. Now next is solubility of gas in liquid. Now many gases dissolve in water. Oxygen dissolve only to a small extent in water. In this dissolved oxygen which sustain the aquatic life. हमें तो पता चला बच्चे कि ऑक्सीजन भी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन स्मॉल एक्सटेंट तक ही डिज़ोल्व होती है. तो ये डिज़ोल्व इन दिस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ. ऑन द अदर हैंड द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर. भाई ऑक्सीजन जिससे लाइफ प्रोसेस चलता है, एक्वेटिक लाइफ मेंटेन रहती है, वो तो इतनी डिजोल्व नहीं होती. लेकिन दूसरे हैंड पे हम ये देखिए HCl हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ना अब हमें पता चला सॉल्युबिलिटी भी, जो गैस होती है ना सॉल्युबिलिटी की लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करती है प्रेशर पर और टेम्परेचर पर. Now the solubility of the gas increases with the increases in pressure. जितना ज़्यादा दबाव बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी. द फॉर सोल्यूशन ऑफ द गैसेज इन द सॉल्वेंट कंसीडर ए सिस्टम एज शोन इन दिस figure. Now see this figure here, the figure number 1 and figure number 2. See this effect of pressure on the solubility of a gas. The concentration of the dissolved gas is proportional to the pressure of the gas above the solution. See, in the first beaker A, you have to apply a pressure, that is the pressure of W1, that is the weight.
ठीक है। तो आपने ज़रा देखा होगा सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स देखो कितने कम हैं, बट व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, दैट इज W1, W2 एंड W3, these are the weight, that means you increase the pressure and see this, the particles of this gas dissolved in the liquid. Now this is the effect of pressure. कहने का मतलब क्या है बच्चे, प्रेशर बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो भी डिजोल्व होती चली जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन प्रेशर। तो लोअर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज द गैसियस। इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया था कि जो लोअर पार्ट है वो सॉल्यूशन है, अपर पार्ट क्या है आपका गैस, प्रेशर P, टेम्परेचर T। अज्यूम करिए कि ये जो आपने सिस्टम लिया वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मीन्स रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग, जितने गैस के पार्टिकल एंटर कर रहे हैं ना उतने ही सॉल्यूशन फेज से वो लीव कर कर भी जा रहे हैं। सो इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू ए स्मॉलर वॉल्यूम। तो आप ऐसा करिए, प्रेशर को बढ़ाइए सॉल्यूशन के ऊपर लेकिन स्मॉलर एक्सटेंट तक बढ़ाइए, ठीक है। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियर पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ते चले जाएंगे। एट दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल विल पर यूनिट वॉल्यूम over the solution and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of the solution to enter it। तो जितने particles enter करेंगे उनकी values जो है वो increase होती चली जाएगी। Now solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached। अब सोलिबिलिटी जो गैस की आएगी वो बढ़ेगी और वो तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक एक नया इक्विलिब्रियम रीच नहीं करेगा, और वो रिजल्ट होएगा इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन एंड दस इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। भाई जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेनरी। ये जो लॉ है ना कि भाई ये जो लॉज है या ये जो फैक्टर है कि आप किसी गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेनरी। तो हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन। उसने हमें ये बताया था कि हम एक प्रेशर और एक गैस की सॉल्युबिलिटी में किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, वी कैन ईजिली जज इट बाय हेनरी लॉ। Now what this law states, the solubility of the gas in a liquid is directly proportional। भाई किसी भी गैस की solubility लिक्विड के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होती है जो उस लिक्विड या फिर उस सॉल्यूशन के ऊपर आता है, किसकी वजह से, उसके वेपर प्रेशर की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज डेल्टन। पहले हेनरी लॉ आया, अब डेल्टन क्या कहते हैं, डेल्टन इज कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, ऑल्सो कंक्लूडेड द इंडिपेंडेंटली दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अब डेल्टन क्या कहते हैं, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर इज अ फंक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। वो किसका फंक्शन है, पार्शियल प्रेशर है किसका, गैस का। इफ़ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, अगर आप मोल फ्रैक्शन का टर्म ले रहे हो गैस का सॉल्यूशन के अंदर, वो भी हमें क्या बता देगा, solubility of the gas in the liquid when it can be said that। तो by Dalton we can say easily mole fraction of a gas। किसी भी गैस का सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। भाई जो पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का लिक्विड के ऊपर उसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। So the most commonly used form of Henry law states that the partial pressure of the gas। So Henry ने अब क्या लॉ दे दिया बच्चे कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है इन वेपर फेस में, जब वेपर फेस में किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। हेयर इज द फॉर्मूला वेयर पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, where x is the mole fraction of that gas, and if you want to remove proportionality sign then taking a constant, and that is called the kh, and this is also called the Henry constant। Now if we draw a graph between partial pressure of the gas
वर्सेस द मोल फ्रैक्शन। अगर आप दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ग्राफ कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। क्या कहना चाहता है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे कैसा क्या बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। उतना ज़्यादा जो गैस के पार्टिकल्स है वो किसके अंदर जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज। डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट KH वैल्यू होती है सेम टेम्परेचर पे भी। तो दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। जो हमें ये बताता है KH भी अकॉर्डिंग टू द गैस नेचर के हिसाब से होता है। इट ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन दिस दैट द हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KH की गिवन प्रेशर पे, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। इट कैन बी सीन दिस KH वैल्यू ऑफ बोथ नाइट्रोजन and oxygen. Now here this is some table that nitrogen temperature 303 Kelvin and KH values is nitrogen की 88.84 and 293 Kelvin that is 76.42, है ना। तो दैट मीन्स इनकी सबसे जो हीलियम दैट इज़ ऑल्सो 144.97। तो हमने यहाँ से देखा कि KH वैल्यू नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंडिकेटिंग दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे सोल्यूबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले ही ऑलरेडी वो गैस है भाई, अगर आप उसका भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो गैस तो निकल जाएगी। सो इसलिए टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तब किसी गैस को हम किसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, सॉलिड के लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। नॉट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट द एक्वाटिक स्पीशीज़ आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर। तो इसी वजह से एक्वेटिक जो स्पीशीज़ होती है वो ज़्यादातर ठंडे पानी में कंफर्टेबल होती हैं रादर देन द वार्म वाटर। Now here is one numerical that is based on the Henry law. Now if N2 gas is bubbled through water, वो कह रहा है अगर N2 गैस की बबलिंग हो रही है पानी के अंदर 293 केल्विन पर, तो हाउ मैनी मिलीमोल्स, तो कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर कितने मोल्स नाइट्रोजन के हैं जो वो डिजोल्व हो रहे हैं। अज्यूमिंग दैट नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर 0.987 बार। पार्शियल प्रेशर क्या है, 0.987 बार। हेनरी कांस्टेंट क्या है, 76.48 किलो बार। नाउ यू हैव वॉल्यूम, नाइट्रोजन की वॉल्यूम, you have partial pressure of the nitrogen and you have the Henry constant. Now we know that by Henry law that is P is equal to Henry constant multiplied by mole fraction. Now by using the Henry law we can easily calculate the mole fraction of the nitrogen, क्योंकि वो मोल्स ही तो रिजोल्व होंगे ना। Now मोल्स कैसे करेंगे, partial pressure and the Henry constant, that is 0.987 divided by 76.48 and it comes out to be 1.29 into 10 to the power minus 5. As 1 liter of water contain 55.5 moles. 1 लीटर पानी के अंदर कितने मोल्स होते हैं वाटर के, 55.5 and N is the number of moles of nitrogen. So mole fraction of this nitrogen is मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नाउ वाटर मोल 55.55 and the mole fraction of nitrogen you can easily calculate by the formula of Henry law, that is comes out to be 1.29 10 to the power minus 5. As the denominator is neglected, क्यों, क्योंकि solution बहुत ज़्यादा dilute है, so n by 55.5 which is equal to 1.29 10 to the power minus 5. Now multiply it, किसको multiply करेंगे बच्चे, 1.29 into 10 to the power minus 5 को किससे, 55.5 से, and it comes out to be 7.16 into 10 to the power minus 4 moles. Clear? Now
दस इन डिनोमिनेटर नेग्लेक्टेड कर दिया, दस एन वैल्यूज 1.29 10 to the power minus 5 और into 55.5 and it comes out to be 7.16 into 10 to the power minus 4 or you have to know millimoles, then multiply by 1000. Now if you multiply with 1000 and it comes out to be 0.716 moles. Now next is Henry law. Find several application. Now next is the application of Henry law and industries and explain some biological phenomena also. Now first application, to increase the solubility of CO2 in the soft drink and soda water. बच्चे जो हम कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल पीते हैं उसमें जो CO2 गैस फिल की हुई होती है वो भी हम कैसे करते हैं, बाय हाई प्रेशर ना. स्कूबा डाइवर्स, नो बट आर स्कूबा डाइवर्स जो अंडर वाटर जाते हैं, ठीक है, मस्ट cope with high concentration of dissolved gas while breathing in the air at high pressure under water. क्योंकि पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तो इंक्रीज्ड प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी में बच्चे जा रहे हो प्रेशर बढ़ता जा रहा है. और हमने तो ये पढ़ा है हेनरी लॉ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस भी डिजोल्व होने लग जाती है. तो ड्यू टू दिस रीजन जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाता है तो उसके ब्लड के अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस भी क्या हो जाती है, डिजोल्व होने लग जाती है. तो डाइवर्स जैसे अब सरफेस पे आएगा प्रेशर कम होने लग जाएगा और वो जो डिजोल्ड गैस है जो उसके ब्लड के अंदर गई है वो बाहर निकलते टाइम क्या प्रोड्यूस कर देंगी, बबल्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द ब्लड एंड दिस ब्लॉक द कैपिलरीज. ये उसकी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगी एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन एंड दैट इज कॉल्ड द बेंस. ये क्या करेंगे, इनको बेंस कर देंगी. तो इस पेनफुल डेंजरस लाइफ हो जाती है उसकी, तो उसको बेंस को अवॉइड करने के लिए और टॉक्सिक इफेक्ट को रोकने के लिए हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं दे यूज टैंक एंड दिस टैंक इज फिल्ड विद हीलियम 11.7% एंड नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1%. नाउ थर्ड एप्लीकेशन, हाई एल्टीट्यूड. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर कम हो जाएगा as depth of the ground level. This lead to the low concentration of oxygen in the blood. अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी और टिश्यू पर भी. नॉट टिश्यू ऑफ द पीपल हैविंग एट हाई एल्टीट्यूड एंड क्लाइंबर्स. नाउ ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक. अब इससे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, वो सोच ढंग से नहीं पाएंगे. और ये सिम्टम किसका आ जाता है, एनोक्सिया. मीन्स अगर आप के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एंड दिस लीड्स टू एनोक्सिया. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट, देयर विल बी नेगेटिव इम्फेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की सोलिबिलिटी बढ़ती नहीं है बट क्या हो जाती है, डिक्रीज. तो व्हेन डिजोल्ड द गैस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज. जब किसी भी लिक्विड फेज में डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है या डिजोल्ड एनी गैस होती है, द प्रोसेस डिजोल्यूशन कैन बी कंसीडर सिमिलर टू कंडेंसेशन. डिजोल्यूशन के प्रोसेस किसके इक्वल कर दोगे, कंडेंसेशन के. हीट इवोल्व होने लग जाएगी इस प्रोसेस में. तो लास्ट सेक्शन दैट डिजोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व द डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब हमें पता है कि भाई डिजोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इक्विलिब्रियम आता है एंड दस मस्ट फॉलो एट ली चेटिलियर प्रिंसिपल. क्योंकि अब डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, सोलिबिलिटी शुड डिक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द